सो आपके पास AES जो होता है वो होता है आपके पास नॉन फीस्टल साइफर, ठीक है। 128 बिट का ब्लॉक होता है, ठीक है। इट कैन यूज़ 10, 12 और 14 राउंड्स, ठीक है। तो यहाँ से हाईलाइट हुआ है कि अगर 10 राउंड्स यूज़ होते हैं तो 128 होगा, 12 होगा तो 192 होगा, 14 होगा तो 256 होगा। ना ये जो चीज़ सेपरेटेड हुई है ना, ये 64 बिट के की से हुई हुई है। सो 128, 192, 256, सो 128 प्लस 64 इज़ 192 प्लस 64 इज़ 256। ना AES के अंदर हमारे पास जनरल चीज़ क्या होती है, जनरल फ्लो डायग्राम ये होता है कि प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उस पर हम राउंड की लगाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास पहला राउंड आता है, फिर राउंड की लगाते हैं, फिर दूसरा राउंड आता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, टू डिपेंडिंग ऑन कि आपने अपने ये बिट का साइज़ क्या है, उस बिट के साइज़ पे ये राउंड वेरी करेगा, या वाइस वर्सा। अगर आपको राउंड पता चल जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका प्लेन टेक्स्ट का साइज़ क्या है, ठीक है। नाउ ये थोड़ा सा फ्लो डायग्राम होता है हर राउंड का, लेकिन उससे इसको देखने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एक स्टेट क्या होती है, ठीक है। तो एक स्टेट जो होती है प्लेन टेक्स्ट में कुछ ऐसे लिखा होगा AEZZ, तो आपके पास इसको हम लुकअप करेंगे ए को अपने टेबल में और देखेंगे कि वो किस पे रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट। एंड देन ई को भी देखेंगे, जी को भी देखेंगे, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। तो वहाँ पर इसकी कोई डेसिमल वैल्यू होगी, उसकी कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी, तो हम उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू डाल देंगे। सो 2 डिजिट से ये रिप्रेजेंट हो रहा है। नाउ ये आपका आ गया बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी हेक्साडेसिमल या साइफर रिप्रेजेंटेशन। इसको हम इंसर्ट करेंगे एक मैट्रिक्स में, ठीक है, रो वाइज, ठीक है। तो हमने पहले इसको इंसर्ट किया 0 0, फिर हमने इसको इंसर्ट किया 0 4, एंड देन इसको किया, एंड देन इसको किया। फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर ओनली सिंप्लिसिटी मैंने उसको 2x2 मैट्रिक्स बनाया हुआ है, वरना इफ़ इट्स लाइक अ 128 बिट वाली फाइल तो देन इज़ गोइंग टू बी अ 4x4 मैट्रिक्स, ठीक है। द रीज़न वाई इज़ गोइंग टू बी अ 4x4 मैट्रिक्स इज़ बिकॉज इसकी कन्वर्जन में मतलब थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दे देता हूँ। वो ये है कि अगर आपके पास एक 4x4 की ग्रिड होगी, सही है। सो इमेजिन दैट दिस इज़ लाइक अ 4x4 ग्रिड एंड ईच ऑफ दिस is like a cell, right? So 4x4, and in each of those four, in each of those like cells, there's going to be a hexadecimal value जो हम इसकी बात कर रहे थे, right? So this is going to be 4 for representing the hexadecimal value, which is converting that hexadecimal value into the bits, right? क्योंकि एक hexadecimal के अंदर 4 बिट्स होती है, एंड हमारे पास हर एक सेल के अंदर कितनी हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हैं, 2 हैं। So this is going to be multiplied by 2. So when you calculate this, this is then going to be 128, which is the reason why that you're using a 4x4 matrix. So that was the calculation part. It's not that important, but I thought कि मैं समझा दूँ वो चीज़. So ये पूरी जो कैलकुलेशन जो है ये अज्यूम करते हुए हो रही है कि ये 4x4 मैट्रिक्स होना चाहिए, बट सिंप्लिसिटी के लिए एंड स्पेस बचाने के लिए आई चोज टू यूज़ a 2x2 grid. Now, as you can see over here, once you know what is your state, the first thing that you have to do is you need to do substitute bytes. But before that, let me tell you some two notes things that you always need to make sure. Before going into the first round, you need to make sure that you apply the round key before the first round, right? So before this is actually happening, अगर first round है तो तुम्हें ऐड राउंड की करनी है। ऐड राउंड की क्या करती है, जो भी तुम्हारी स्टेट है उसको तुम जोर करोगे एक किसी कॉलम वेक्टर के साथ, ठीक है, और उसका जो फिर रिज़ल्ट आएगा ईच कॉलम के साथ, ईच कॉलम के साथ। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर 47 87 है, उसको जोर किया 32 के साथ, तो तुम्हारे पास कुछ ये चीज़ आएगी। देन तुमने लिया 32 16 और उसको जोर किया 32 के साथ, एंड देन यू गेट समथिंग। सो ये पहले अप्लाई कर लिया, फिर हम आए, मतलब ये हम अगर अज्यूम करें ये फर्स्ट राउंड है। अगर फर्स्ट राउंड नहीं होता तो फिर हम बस डायरेक्टली किस पार्ट पे जाते हैं, सब्स्टिट्यूट बाइट्स पर। एक और चीज़ ये है कि फाइनल राउंड के अंदर मिक्स कॉलम वाला एक ये जो पार्ट है ये नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एंड अज्यूम कि ये हमारा सेकंड राउंड है, ठीक है, बिकॉज दैट्स मोर जेनेरिक एंड दैट्स मोर इट्स गोइंग टू बी अप्लाइड टू मोस्ट ऑफ द केसेस। सो सब्स्टिट्यूट बाइट्स किया, सब्स्टिट्यूट बाइट्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो भी मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास क्या था, ये यहाँ से आ रहा था स्टेट, राइट, यहाँ से आ रहा था।
तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि ये जो भी चीज़ आई है हमारे पास सब्स्टिट्यूट बाइट, मतलब हाँ एस, इसको एस बॉक्स भी कहते हैं. इट्स वेरी सिमिलर टू द एस बॉक्स फ्रॉम द डेस. ठीक है, तो हम इसको लुकअप करेंगे एंड द वे हाउ वी लुकअप इज़ यू कैन अज्यूम दैट दिस इज़ लाइक अ हेक्साडेसिमल टेबल जिसके अंदर 0 से लेके 9 तक वैल्यूज़ हैं, एंड देन ए बी सी डी ई एफ, and then similarly 9 तक, and then A B C A F. So 0 0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 0 0 पर यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है F3, तो इस जगह पे F3 रिप्लेस कर दो, एंड सिमिलरली फॉर ऑल ऑफ द वैल्यूज़. एंड अगर इसका इन्वर्स निकालना होगा, सो व्हाट यू गोइंग टू डू इज़ यू गोइंग टू फाइंड F3 इन दिस टेबल, एंड देन यू गोइंग टू सी कि इसका रो कॉलम क्या है, एंड देन यू गोइंग टू गो बैकवर्ड्स इफ़ यू वांट टू डू डिक्रप्शन. नाउ देन यू गोइंग टू डू रो शिफ्टिंग, क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट होता है जब आप सब्स्टिट्यूट बाइट कर लेते हो तो उसका सेकंड पार्ट होता है रो शिफ्टिंग. एंड रो शिफ्टिंग बेसिकली ये कहता है कि जो उसका रो इंडेक्स है उसकी बेसिस पर उतने अमाउंट ऑफ शिफ्ट होना चाहिए लेफ़्ट की तरफ. सो यहाँ पे सिंस 0 लिखा हुआ है तो दिस इज़ गोइंग टू बी शिफ्टेड 0 टाइम्स. सिंस देयर इज़ 1 ओवर हियर, सो दिस इज़ गोइंग टू बी शिफ्टेड 1 टुवर्ड्स द लेफ्ट. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज़ व्हाट मिक्स्ड कॉलम्स. सो मिक्स कॉलम्स क्या करता है, मिक्स कॉलम्स ये कहता है कि इफ़ आई हैव दिस मैट्रिक्स n बाय n एंड इफ़ आई हैव अ कांस्टेंट c, राइट, अगेन कॉलम्स उठाओ और उसको रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करते जाओ. तो मैंने एक कॉलम उठाया F323, इसको मल्टीप्लाई किया एक कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ. सो सेम डायमेंशन का ये आपके पास होना चाहिए कांस्टेंट मैट्रिक्स. आपके पास कोई वैल्यू आई, फिर यू रिपीट दिस अंटिल यू आर डन विद ऑल ऑफ द कॉलम्स. सो आई डिड दिस विद दिस ग्रीन थिंग एज वेल, एंड देन आई गॉट दिस थिंग. So once we're done with the mixed columns, the last thing that you want to do is then do the add round key. So वो चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि you're just going to take the column of this matrix and then XOR it with the round key, and then you're going to get your answer. So that was the AES algorithm. It's pretty easy. Let's talk about diffusion and confusion. What is meant by diffusion and confusion in AES. I think in the next video or in some part of the video I will be talking about how to do diffusion confusion, what is meant by diffusion confusion in this algorithm, but it's not going to be in this one. So in the diffusion confusion for the AES, diffusion basically refers that if you're changing a character in the plain text file, then several characters of the ciphertext will be changed. And if similarly, if one character of the ciphertext is changed, then a lot of different characters in the plain text is changed. However, in confusion, we're basically saying is that कि आपका जो key जो होगा, it shouldn't be directly related to your ciphertext in a very simple way. So for example, अगर पास Caesar cipher है तो वो बहुत आराम से related होता है. But instead we want it to be related to several parts of the key, so it makes it more difficult to decrypt. So आपके पास जो confusion जो होती है, it is basically referring to the substitution part, right? So हम ये जो substitution कर रहे थे, that is the confusion part, and the diffusion part is the permutation or the transposition part. So ये जो हम round shifting कर रहे थे, that was the diffusion part. Now there's a lot of information over here, right? The encryption part and the multi-authentication code part will be discussed in the next video, so not in this video. So let's just complete this part of block cipher modes of operation. Okay, so there are different modes, and they're each going to have different functionality and different application. So you have ECB, which is electronic code block. You have CBC, which is basically cipher block chaining. Then you have CFB, which is cipher feedback. You have output feedback, and then the last one is the counter, which is also known as CTR. So what you're doing in ECB is you're taking each block of a plain text of 64-bit block, and you're applying a same key independently to each of the blocks. So इसकी application क्या है कि basically अगर आपको कोई एक single value securely transfer करनी है, for example like in encryption key, then you would be using this. If you are going for the cipher block chaining, which is CBC, then इसके अंदर हम करते ये हैं कि एक encryption algorithm के अंदर
हम सबसे पहले जो प्रीवियस साइफर टेक्स्ट है उसको लेते हैं और उसको ज़ोर करते हैं करंट प्लेन टेक्स्ट के साथ, एंड देन यू फीड दैट इनटू द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम. सो इसकी क्या एप्लीकेशन है, यूर यूजिंग दिस फॉर ऑथेंटिकेशन, एंड सिंस इसका नाम यहीं पे ब्लॉक में आ रहा है, सो यूर यूजिंग फॉर जनरल पर्पस ब्लॉक ओरिएंटेड ट्रांसमिशन. सो इसी तरीके से ये काफ़ी सिमिलर, इससे बस फ़र्क ये है कि इससे साइफर फीडबैक जो है ये स्ट्रीम बेस पे काम कर रहा होता है. सो स्ट्रीम बेस, इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट वीडियो, इट इज़ बेसिकली कि कंटिन्यूसली एस बिट्स आपके पास वो हो रहे होते हैं, क्या कहते हैं, प्रोसेस हो रहे होते हैं, एंड दैट प्रीवियस यहाँ पे वही सेम प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आपने प्रीवियस साइफर टेक्स्ट को डायरेक्ट एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम में डाल दिया, उसका जो रिज़ल्ट आया उसको ज़ोर किया आपने प्लेन टेक्स्ट के साथ, एंड देन यू गेट योर साइफर टेक्स्ट अगेन एंड अगेन. इसकी भी वही एप्लीकेशन है, ऑथेंटिकेशन जनरल पर्पस स्ट्रीम्ड ओरिएंटेड ट्रांसमिशन है. देन आउटपुट फीडबैक क्या होता है? आउटपुट फीडबैक इज सिमिलर टू CFB, विच इज़ योर CFB स्ट्रीमलाइन जो आपकी थी, स्ट्रीम बेस्ड ट्रांसमिशन. एंड ये हम बोल रहे होते हैं कि इसके अंदर बस डिफरेंट ये होता है कि इनपुट जो हम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में जो डाल रहे होते हैं वो प्रीवियस साइफर टेक्स्ट के बजाय हम प्रीवियस डेस का आउटपुट दे रहे होते हैं. सो डेस एल्गोरिथम का जो आउटपुट होता है वो इसके अंदर इनपुट जा रहा होता है. एंड अगेन इसकी वही है, स्ट्रीम ओरिएंटेड ट्रांसमिशन है, एंड एग्जांपल इसकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है. एंड काउंटर जो होता है आपके पास, उसके अंदर क्या होता है, हम जोर कर होते हैं प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्टेड काउंटर के साथ, काउंटर प्लस प्लस कर होता है फॉर ईच ऑफ द ब्लॉक. एंड इसकी एप्लीकेशन क्या है? जनरल पर्पस ब्लॉक ट्रांसमिशन, एंड इट इज़ यूजफुल फॉर हाई स्पीड ट्रांसमिशंस. Okay, so that was it.